The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good afternoon, all. Welcome to our new webinar called HDFC Nifty 200 Momentum 13 Index Fund. So, this is the new i- index fund which is coming from House of HDFC AMC. So, to tell us more about this index fund, we have Mr. Shikhar Sethi with us. He is the product specialist from HDFC AMC. So, Shikhar, over to you. Okay, thank you, Omkar. Could you move to the next slide and two slides down, please? Uh, One more slide down. Okay, hello everyone. As Omkar mentioned, today, we will be talking about the HDFC Nifty 200 Momentum 30 Index Fund. The NFO for this is going on till the 23rd. We want to, give you a very detailed overview of what this kind of product is all about. So let's first start with what is momentum, right? So momentum, there's another concept very closely related to momentum, which people are able to understand better, and that is called trends. So we are, always familiar with trends in our personal life. We very often will be following the latest trends in fashion or restaurants, recreation, so on and so forth. So you'll notice that these trends sort of come and go. When it's popular, we are also enjoying those trends, and then as and when new things emerge, we also move on to the new trends. So just like how we observe these trends in our day-to-day life, momentum investing, it's a style of investing which looks out and tries to capture the trends which are in the stock market. So it's about following trends within different stocks and sectors which are doing well within the stock market. So that's basically, what momentum investing is. And momentum is talking about the tendency, so not guarantee, but the tendency for a stock to keep moving in the direction of its recent trend. So what that means is that if a stock is going up, if it's in an uptrend, then chances are, right, no guarantee, but the chances are that the uptrend will continue. So this phenomena is called momentum, and momentum investing, how to sort of profit from this market phenomena is what this product and the rest of the presentation is about, right? So now that we have some idea of what momentum means, how do we actually measure this momentum? So if we think of taking the analogy of two cars, right? So if two cars are driving on the road, the one which is going faster, it has the higher momentum, right? Just by definition of using a physics definition. So in the same way, in the stock market, if you have two stocks, whichever one is going faster, in this case, whichever one is giving you higher returns, that stock is said to have higher momentum. So we can see here that in this slide we've mentioned that the metric used to define this momentum factor is actually a combination of the 6-month and 12-month price return adjusted for the standard deviation. So main thing is that you can just imagine your different stocks that you yourself are tracking in the market, and you'll see that whichever stocks have been performing well in the recent past, that means that they have a good 6-month return, strong 12-month return, then those stocks are said to be high momentum. And this strategy is looking to select 30 such high momentum stocks to create a portfolio, right? So that's the basic way momentum is measured in the index, right? And now we'll just get into more details of how the index is made. But again, it's important for investors, to keep in mind that one very unique and differentiating factor about this index
is that it's very dynamic. It keeps adjusting itself as stock market winners keep changing. So we'll see this in more detail later. We'll give some actual examples, but just it's good to keep in mind that this is a very dynamic index. It is very responsive to changes in market conditions, and it's this adaptability which has helped it historically outperform Nifty 200, Nifty 50, these kind of broad market indices. So with that basic introduction on what momentum is and why momentum investing or momentum products are could be useful to add to your portfolio, let's go on to the next slide, please. Okay, so here we'll just spend some time on how is this Nifty 200 Momentum 30 index, how does it actually work? So the universe or the parent index is the Nifty 200. That is the largest 100 large caps and mid caps are part of the Nifty 200 index. So from this large universe of 100 large and 100 mid caps, which is the Nifty 200, we only the F&O eligible stocks are eligible for selection. The rationale is that F&O stocks are generally quite liquid. So if the fund manager needs to deploy a lot of money, then it's better that he's doing this in liquid stocks, because they will be able to sort of manage the portfolio easily. So the main sort of result is that this strategy can take a lot of AUM, because the underlying stocks are generally quite liquid. Okay, so we have taken now all the F&O eligible stocks of the Nifty 200, and now what needs to be done is that for each eligible stock, right, the index company will be calculating what is the last 12-month return and what is the last 6-month return. Okay, so stocks which generally have good 12 and 6-month return, they have higher momentum, as we said. So what the index company does is it measures these returns, adjusts it for the volatility, and then after doing some amount of maths, which is we've covered in more detail in the appendix if anyone is interested. After getting these returns, they end up with a number called normalized momentum score. So here it's very simple. The better the stock's momentum, the higher the momentum score, right? So once for all the eligible stocks, we've kind of got the normalized momentum scores for each. Then in a simplistic manner, the top 30 stocks are selected. So just to recap, you have 200 stocks in the Nifty 200. After that, some stocks, only the F&O eligible stocks are actually considered, and then within those stocks, the top 30 high momentum stocks, which means that they have had strong recent past performance, those are included in the index, right? So now we have the 30 names. Next step that the company does is to cap these stocks at a 5% weight. Rationale is that we do not want that one or two stocks are dominating the index and causing a lot of returns to be moving around. So the stock is capped at 2% at 5%, right? And the last thing which is worth mentioning is that every 6 months the portfolio is reviewed. So by that we mean that this entire process I described, the index company will see all the eligible stocks in Nifty 200. They will recalculate 12 and 6-month returns, and then once they sort of have that, they will see what are the momentum scores looking like. So if there are any stocks in the portfolio which have not been doing well, they were selected but they've not done well, their momentum is low, they will be removed. And conversely, if there are any stocks outside the index, right, which have done well, which are showing promise of continuing to do well as per the calculation, they will be included. So this is called a portfolio review. It's done twice a year, and
the important thing is that this is, it's this kind of review which is what keeps the portfolio fresh and up to date. So this is how it's able to adapt to the changing market conditions. It's done twice a year to keep it sort of, up to date. So that was a summary of how the index is created. You go from 200, in the end we are just selecting 30 stocks which have high momentum, and the names, so what names are in the portfolio, what has to be bought, sold, that is reviewed twice a year, right? So now I think we can move on to the next slide just to give you an illustration. Omkar, next slide please. Okay, so in here we are just trying to give you a very simple illustration of how a selection is done. So you can assume that here the universe is only 5 stocks, and of that we want to select 2 stocks. So you can see stock A and B, they Shikhar, generally have. Hello. sorry to interrupt you, Shikhar. Just Yeah. wanted to tell you, like a few of our customers in the chat box, as I can see, they are Huh? saying can do this in English, sorry, Hindi also. हिंदी The combination of both. So ठीक that है, will be ठीक। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। तो एक सेकंड फिर पिछले स्लाइड पे चले जाइए। okay. सो ठीक है, मैं जल्दी से ये स्लाइड हिंदी में भी समझा देता हूँ। सो यहाँ पे आपका निफ्टी 200 इंडेक्स है, विच इज 100 लार्ज कैप्स, 100 मिड कैप्स, राइट? उसमें से जो स्टॉक्स एफ एंड ओ एलिजिबल है, उन जो एफ एंड ओ सेगमेंट में है वो एलिजिबल होते हैं बिकॉज दे आर मोर लिक्विड। तो फंड मैनेजर को इन स्टॉक्स में पैसे अगर जब इन्वेस्ट करना है, इट इज इजियर टू डू सो, ठीक है? उसके बाद इंडेक्स कंपनी विच इज एनएससी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो हर एलिजिबल स्टॉक का 12 मंथ एंड 6 मंथ का रिटर्न कैलकुलेट करता है, राइट? एंड इट एडजस्ट फॉर द रिस्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हर स्टॉक के ये रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने के बाद वो थोड़ा सा उनके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने अपेंडिक्स में रखे हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट उनको ये रिटर्न्स को कंबाइन करते हैं एंड दे कम अप विद अ नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर। सो जिसका ज्यादा अच्छा रिटर्न होता है उसका ज्यादा अच्छा नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर भी होता है, ठीक है? अब आपके पास सारे स्टॉक्स, एलिजिबल स्टॉक्स के नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर्स हैं, एंड देन व्हाट इज डन इज कि उसमें से जस्ट सिंपलिस्टिकली जो सबसे बेस्ट 30 स्टॉक है, राइट, जिनके जो 30 स्टॉक है जिनके सबसे हाई नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर है, उनको इंडेक्स में लिया जाता है। दिस इज सिंपली स्पीकिंग, ठीक है? सो दैट इज हाउ द स्टॉक्स आर सिलेक्टेड। 30, सो 200 में से 30 ही चुने जाते हैं। दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वन इज की हर स्टॉक को 5% पे कैप किया जाता है, मतलब कि जब भी इंडेक्स का रीबैलेंस होता है वो वेट, हर एक किसी भी स्टॉक का वेट 5% से ज्यादा नहीं होता है, राइट? दिस इज टू इंश्योर कि एक या दो स्टॉक, सिर्फ एक या दो स्टॉक से इंडेक्स ज्यादा उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, तो सारे स्टॉक्स को मतलब 5 पे कैप होता है एंड सारे स्टॉक्स को लाइक वो थोड़ा बैलेंस आ जाता है पोर्टफोलियो में। एंड लास्ट चीज इज कि हर जून एंड दिसंबर, राइट, ये पोर्टफोलियो रिव्यू होता है। सो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स कंपनी फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करती है। सो दे टेक निफ्टी 200, उसमें से एफ एंड ओ एलिजिबल स्टॉक्स को लेते हैं एंड देन ये पूरा कैलकुलेशन वापस से करते हैं, व्हाट इज द 6 मंथ, व्हाट इज द 12 मंथ नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर क्या है, एंड फिर वो देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, अगर उसका परफॉर्मेंस खराब है, उसको निकाल देते हैं, राइट? और उसकी जगह में जो भी स्टॉक बाहर है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड बाय द कैलकुलेशन, मतलब कि द एंटिसिपेशन इज कि फॉरवर्ड परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, उसको इंडेक्स में लेते हैं। So like this, ये review is very important because this is what is वो portfolio को like ताजा fresh रखता है, because it's then allowing it to change to market conditions। जो stock अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको लिया जाएगा और जो खराब कर रहा है उसको निकाल देंगे। So ये प्रोसेस साल में 2 बार किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जस्ट बैक टू दिस इलस्ट्रेशन। सो यहाँ पे 5 स्टॉक है, राइट? सपोज करो कि यूनिवर्स में 5 स्टॉक है और हमें 2 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं।
सो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ए एंड बी, राइट, उनके 6 महीने और 12 महीने का रिटर्न काफी अच्छा रहा है कंपेयर टू सी डी ई, जिसका या तो 6 महीना या 12 महीना का रिटर्न खराब है, राइट। सो यहाँ पे भी हमने थोड़ा लाइक सिंप्लीफाई ही किया है, बट आप देख सकते हो कि रिटर्न्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसको फिर ये मोमेंटम रेशियो में हम कंबाइन करते हैं, जस्ट रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ही है, और फिर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके वी आर एबल टू गेट द नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर। और यहाँ पे जिसका सबसे ज्यादा दो स्टॉक ले रहे हैं, सो जिन दो स्टॉक का सबसे हाईएस्ट नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर है उसको सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी ए एंड बी हैव बीन सिलेक्टेड, बट पॉइंट वही है कि जिसका रिटर्न और ज्यादा रिटर्न कम रिस्क होता है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे आर परसीव टू बी हाई मोमेंटम स्टॉक्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हमने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था कि पोर्टफोलियो में ये स्ट्रेटजी का एक बहुत लाइक खासियत है कि इट इज वेरी डायनामिक एंड इट चेंजेस इटसेल्फ टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप के स्टॉक्स या सेक्टर्स, राइट, वो जब उनमें स्ट्रेंथ आना लगता है, then usually in the next review or one or two reviews में वो पोर्टफोलियो उन स्टॉक्स को लेता है और जो स्लो डाउन हो रहा है उनको निकाल देता है। सो you can see here for example, ये चार्ट थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट मैसेज सिंपल है कि अगर आप देखो तो 2019, राइट, जो सबसे लेफ्ट वाला चार्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल उसका बहुत प्रैक्टिकली जीरो वेट था उस टाइम पे, बट थ्रू 2020 आई थिंक आपको याद होगा तब कोविड हुआ था, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज, डिजिटलाइजेशन, एआई की बात भी शुरू हो गई थी। सो आईटी सेक्टर स्टार्टेड डिड क्वाइट वेल थ्रू 2019 एंड 2020। तो इसलिए आप देख रहे हो 2020 में बाय एंड ऑफ 20 मतलब दिसंबर 2020 तक उसका वेट 16.5% तक बढ़ गया था, राइट, बिकॉज उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था, तो स्ट्रैटेजी ने आईटी सेक्टर का वेट बढ़ा दिया। सिमिलरली ये अपना थ्रू 21 उसका वेट और भी बढ़ा बिकॉज सेक्टर वाज स्टिल डूइंग वेल, राइट। सो दैट इज गिविंग यू वन एग्जांपल कि जब सेक्टर में वो स्ट्रेंथ आ रहा है तो उसका वेट बढ़ता है, एंड जब सेक्टर में परफॉर्मेंस खराब होता है और स्टॉक्स विद इन दैट सेक्टर का परफॉर्मेंस खराब होता है उसको निकाल देते हैं, राइट। वन अदर क्विक एग्जांपल, अगर आप ये कैपिटल गुड्स, राइट, जो बिल्कुल लोएस्ट ये ऑरेंज बॉक्स में है, राइट, पहले 2.4 फिर 1.4 फिर आप देख रहे हो कि उसका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो इसमें भी यू कैन ऑब्जर्व, अगर आप वापस जाओगे आप देखोगे बिटवीन 2018 टू 2020 इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। वहां उस टाइम पे हाई ऑयल प्राइसेस थे, IL&FS बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, काफी लाइक प्रॉब्लम्स थे इन द ब्रॉडर इकोनॉमी। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स ऐसे टाइप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस खराब था, तो दैट्स व्हाई आप देख रहे हो 2019 2020 में उनका वेटेज कम था। बट आफ्टर कोविड, आफ्टर उसके बाद इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, एंड यू कैन सी कि बिकॉज उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है थ्रू टाइम उनका वेट बढ़ते जा रहा है, एंड including these kind of stocks in the index has helped boost the outperformance, right? So यही मैसेज है इस चार्ट का कि आप देख रहे हो काफी एरोज ऊपर नीचे जा रहे हैं, बट मैसेज यही है कि वो सेक्टर वेट्स काफी बढ़ते हैं और जब सेक्टर अच्छा कर रहा है और जब खराब कर रहा है तो वो कम हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी डायनामिक स्ट्रेटजी। वो इट्स ऑलवेज ट्राइंग टू, एज वी सेड इंट्रो में, इट्स ट्राइंग टू कैच द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस स्लाइड एक्चुअली पिछले स्लाइड के की तरह मतलब उसी को एक्सप्लेन करने में हमने थोड़े एक दो पॉइंट्स दिए। आप देख रहे हो कि
जैसे मैंने बोला था आईटी सेक्टर का रिटर्न अच्छा था इन दिसंबर 2020, तो उसका वेट बढ़ गया इंडेक्स में। बट आप ये भी देख सकते हो बाय एंड ऑफ 22 उसका काफी रन अप हुआ, फिर 6 महीने 1 साल के लिए उसका परफॉर्मेंस खराब रहा, उसको फिर निकाल दिया इंडेक्स से। सो दैट इज जस्ट गिविंग मोर एग्जांपल्स टू मेक द पॉइंट कि ये कितना सॉर्ट ऑफ डायनामिक इंडेक्स है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो अभी तक हमने काफी थ्योरेटिकल बातें की है कि हाउ इज व्हाट इज मोमेंटम, हाउ इज द इंडेक्स मेड, ये स्ट्रैटेजी हाउ इज इट डायनामिक, ये कैसे अडेप्ट करते हैं। तो अभी लेट अस स्पेंड सम टाइम ऑन लुकिंग एट अभी जो मोमेंटम इंडेक्स के 30 स्टॉक है, व्हाट आर दीस स्टॉक्स, सो दैट आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली पोर्टफोलियो में अभी है क्या, राइट। सो राइट साइड के टेबल पे जो 10 लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दोज आर मेंशन्ड। सो आप देख सकते हो दे आर क्वाइट स्प्रेड अक्रॉस सेक्टर्स। यहाँ पे आपका ऑटो, पीएसयू, फार्मा, ट्रेंड भी है कंज्यूमर का। सो देयर इज अ लाइक क्वाइट अ अमाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडेक्स। एंड एक और चीज विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप लेफ्ट वाले टेबल पे देखोगे, सो उसमें इंडेक्स का वैल्यूएशन दिया गया है कि मोमेंटम इंडेक्स का क्या वैल्यूएशन है कंपेयर टू निफ्टी 200। सो इसमें डिस्पाइट बाइंग द हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स, अभी भी इंडेक्स लेवल पे पीई इज एट अ स्लाइट डिस्काउंट टू 200। सो दैट इज कुछ लोगों का परसेप्शन होता है कि जो स्टॉक बढ़ गए उनका वो बहुत ओवरवैल्यूड होंगे, उनके बहुत हाई पी होगा, बट वी कैन सी कि दैट एट द मोमेंट इज नॉट द केस। अभी भी मोमेंटम इंडेक्स का वैल्यूएशन इज लिटिल बिट लेसर देन द निफ्टी 200, राइट। सो दिस वाज जस्ट आपको टॉप 10 वैल्यूएशन का थोड़ा आइडिया देने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे इस स्लाइड पे बेसिकली आपको हम लाइक दिस इज द ये पूरा पोर्टफोलियो है 30 स्टॉक का। सो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे हमने सारे लार्ज कैप्स रखे हैं और राइट साइड पे सारे मिड कैप्स। सो दैट्स अनदर वेरी गुड फीचर ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इसका पेरेंट निफ्टी 200 इंडेक्स है, तो दैट मीन्स कि आपको एक ही प्रोडक्ट में लार्ज एंड मिड का एक्सपोजर मिलता है, राइट। बट एक चीज आपको याद रखना है कि अभी आप देख रहे हो तो एकदम परफेक्ट 15 लार्ज कैप 15 मिड कैप है, राइट, आउट ऑफ 30, तो हाफ हाफ। बट ये दिस इज जस्ट बाय कोइंसिडेंस, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ हाफ रहेगा। एज मतलब मार्केट कंडीशंस चेंज, जिस सेक्टर में ज्यादा अगर लार्ज कैप्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो ज्यादा लार्ज कैप्स आएंगे, एंड वाइस वर्सा विद मिड कैप्स। बट पॉइंट इज कि आपको एक ही प्रोडक्ट में, या जो अगर लार्ज कैप में मोमेंटम है या मिड कैप में या दोनों में, आपको एक प्रोडक्ट में लार्ज एंड मिड बाय एंड लार्ज दोनों का एक्सपोजर मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि this portfolio is very different from normal broad market index, because normally बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, इस पोर्टफोलियो में नहीं है, बिकॉज फॉर द लास्ट 6-12 मंथ्स उनका मोमेंटम काफी खराब रहा है। तो जो भी फाइनेंशियल नेम्स है दे आर मिक्सचर ऑफ, आप देख सकते हो पीएफसी, आरईसी, फिर एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, फिर एक एनबीएफसी है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। सो काफी मतलब ऑल्दो थोड़ा बहुत इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जो नॉर्मल निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के टॉप स्टॉक्स हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम आर इन द मोमेंटम इंडेक्स एट द मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो लास्ट थिंग ऑन द पोर्टफोलियो, सो यहाँ पे इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि किस सेक्टर्स में मोमेंटम इंडेक्स का ज्यादा वेट है वर्सेस द बेंचमार्क। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैपिटल गुड्स, ऑटो एंड हेल्थ केयर, इन तीन सेक्टर में ऑलमोस्ट 13 to 14 परसेंटेज पॉइंट्स का ओवरवेट मोमेंटम इंडेक्स है वर्सेस 200, राइट। सो निफ्टी 200 में कैपिटल गुड्स सिर्फ उसका उस पूरे सेक्टर का वेट सिर्फ 3% है निफ्टी 200 में, बट मोमेंटम इंडेक्स में उसका अभी वेट इज 17.2%, राइट। सो कैपिटल गुड्स, ऑटो, हेल्थ केयर, इन तीन सेक्टर में मोमेंटम का ओवरवेट है,
एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अंडरवेट है सबसे ज्यादा आईटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में. सो ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट द पोर्टफोलियो, अभी सबसे रिसेंट वाला पोर्टफोलियो. हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद इट कुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट, बट यहाँ पे अगेन इट्स जस्ट टू गिव यू अ फील कि किस किस सेक्टर में ज्यादा वेट है, किस सेक्टर में कम वेट है. एंड आप देख सकते हो कि कई सेक्टर में वो वेट काफी बड़ा है. लाइक कैप गुड्स, ऑटो, हेल्थ के ऑलमोस्ट 20% का वेट है. सो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रॉड मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 200 और निफ्टी 50. नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, सो अभी हमने आई थिंक बेसिकली पोर्टफोलियो का अच्छा आइडिया दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन द पोर्टफोलियो राइट नाउ. सो लेट अस क्विकली डिस्कस द रिटर्न्स एस्पेक्ट. सो ऑन दिस स्लाइड आप आई थिंक क्वाइट क्लियर है कि इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. It has beaten, momentum index has beaten the 200 and the 50 by 1, 3, 5, 10 on all horizons that we have considered. So पिछले एक साल में for example 57% है versus 31% for Nifty 200. Similarly last 5 years में यहाँ पे 23% का रिटर्न है compared to around 17% for the Nifty 200. So here आप basically and right वाले चार्ट में भी वो आपको दिखा है कि over time this index has generated significantly more returns than Nifty 200 and Nifty 50 on a historical basis. Next slide please. So इस slide पे ना we have shown कि again तीनों index लिया है and we have shown कि हर financial year में क्या performance रहा है. So the main message is right वाले टेबल पे देखोगे कि एक so previous slide पे हमने देखा कि over the long term the momentum index has done very well. It has beaten Nifty 200 and Nifty 50. But important and interesting चीज ये है कि ये strong returns have come quite consistently. So ये हम देख सकते हैं कि there have been 18 financial years जिसके पास जिसका डेटा है हमारे पास मोमेंटम इंडेक्स का, राइट. उन 18 साल में से 13 इयर्स तो ऑलमोस्ट 72% में ऑफ द टाइम्स मोमेंटम इंडेक्स हैज आउट परफॉर्म. सो दैट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ गुड फ्रीक्वेंसी. वो दिखा रहा है कि ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल इयर्स वास्ट लाइक इन 72% ऑफ दिस फाइनेंशियल इयर्स मोमेंटम इंडेक्स हैज डन बेटर than Nifty 200 and 50. तो आपको ज्यादा returns मिले हैं and it has historically been fairly consistent. Next slide please. Okay, so here just last slide on returns. It's to just show the investors कि यहाँ पे क्या average rolling return रहा है and what is the risk some of investing in this product. So पहले let's look at average rolling returns. तो यहाँ पे again वो clearly हमें दिखाई दे रहा है कि over let's say we've taken all the 5-year returns, all the 3-year returns, उसका हमने average लिया है. So your average rolling return is higher than the Nifty 200. Momentum index का average rolling return is higher than the Nifty 200. तो उसका ये मतलब है कि if you had invested for any 3 or 5 year period, not always, but on average you would have made higher return than Nifty 200 or Nifty 50, right? So again that is a strong point in favor of the momentum index. But आपको अब ये याद रखना है कि those higher returns have come with higher standard deviation. So अगर आप बीच वाले 3 कॉलम्स को देखोगे तो फिर आप देख सकते हो कि मोमेंटम इंडेक्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी है रिटर्न्स का, दैट इज मोर देन निफ्टी 200 और निफ्टी 50. सो मैसेजेस कि हाँ ऑन एवरेज इस इंडेक्स हैज गिवन हायर रिटर्न्स, बट आपको ये याद रखना है कि बिकॉज इट इज अ 30 स्टॉक पोर्टफोलियो, because some stocks can have a weight of 5% or maybe more. Because of these
reasons, right? Because momentum generally can go up sharply, but कभी-कभी वो reverse भी होता है. Because of all these reasons, historically we have seen कि इस index में ज़्यादा volatility भी रहा है, along with the higher returns. तो overall risk return basis पे देखेंगे तो it's still, that's the last three columns. तो आप still देख रहे हो कि by and large the higher returns have compensated for the higher risk, but still going forward अगर आप इस product में invest करोगे तो आपको थोड़ा इसका more riskiness than Nifty 200 in terms of standard deviation, ये aspect को भी ध्यान में रखिए while you are sort of looking at the higher returns aspect as well. Okay, next slide please. Next slide. So just to summarize जल्दी से because फिर हम Q&A start कर लेंगे. One is that there is तो just to summarize कि इस product में what is the rationale to invest. तो first is growth potential. So हमने देखा कि historically this index has done quite well. It has been able to beat Nifty 2. The momentum index has beaten Nifty 200 and Nifty 50 on point-to-point rolling returns, and उसका by on an FY basis 72% of the times outperform किया है. तो it's showing it's a fairly consistent performer historically, which has given a strong returns over and above the benchmark. So that's the first point. Second is कि ये rules based and transparent है, तो पूरा methodology is predetermined. It's determined by NSE Indices Limited. इसमें हमारा कुछ sort of decision नहीं है. Our fund manager उनका काम ये है कि जो भी stocks और weights हमें NSE से मिलते हैं, they are managing the portfolio to buy those stocks and those weights. Basically index को track करने का ही काम है. We are not taking any stock calls or anything like that. And the advantage is कि it's very convenient for an investor to invest through this index fund route, because all this work of rebalancing, तो हर वो 6 महीने names को निकालना या include करना, weight changes, corporate actions, all this our fund manager takes care of. So that leaves, मतलब it's a very convenient way for investors to invest. एक बार आपने fund में डाल दिया and then everything else जो भी portfolio में change आता रहता है, that is automatically done by the fund manager. ठीक है. Third point is कि dynamic strategy है. So again, very sort of differentiating factor कि this strategy keeps adjusting to the changing market condition and keeps trying to pick up the new trends, and then the longer the trend lasts, the longer this strategy will be able to sort of generate returns from the trend. So in that sense, it is very dynamic. And lastly is lower cost. So by and large, मतलब compared to other funds, the passive funds, because they are just tracking an index, generally have lower cost. So that is beneficial for investors. Next slide. ठीक है. Last slide जिस पे मैं थोड़ा time spend करूँगा, then उसके बाद it's just very simple slide. So just this slide इसमें हम कह रहे हैं कि ये कौन से इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है एंड इस प्रोडक्ट में रिस्क क्या है. सो सूटेबिलिटी हमने ऑलरेडी मेंशन किया है. It's for investors who are looking for that high return potential, who are looking to outperform Nifty 200, Nifty 50 over the long term, but they have to be prepared कि इसमें higher volatility भी आ सकता है, and मतलब they have to keep that expectation in mind, right? That is suitability. And अगर हम risks देखेंगे, so here थोड़ा हमने पहले भी touch किया है in points पे, but we'll just review. One is कि see यहाँ पे stocks select किए जा रहे हैं on the basis of the 6 and 12 month performance, but it's possible कि some stocks do not keep continuing their trend, right? हमेशा ये नहीं होता कि all stocks will always keep performing as per the trend. Some stocks do, some stocks don't. तो जो कभी-कभी trend reverse भी हो जाता है, right? It may not sustain, it may reverse. And जब ये होता है तो फिर index को it takes like one or some review periods for it to adjust to the new market conditions. तो
तो जब कोई मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ है और कोई नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है तो पोर्टफोलियो को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में. इट्स ओनली एडजस्टेड एट द रिव्यू टाइम्स. इन एडजस्टमेंट पीरियड्स में इट्स पॉसिबल कि अंडर परफॉर्मेंस या थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी हो. सो इन्वेस्टर्स शुड कीप दिस इन माइंड कि हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होता है. जब ट्रेंड में कोई शिफ्ट आता है, नया ट्रेंड आता है, देन समटाइम्स द इंडेक्स कैन बी लिटिल मोर वॉलेटाइल इन द इंटेरिम. ओके. एंड लास्टली कि यहाँ पे सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन इट कैन बी हायर देन द ब्रॉड मार्केट इंडिसेस. तो आपने देखा जैसे अभी कैप गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटो almost 20%, right? That it's not very concentrated, but compared to benchmark जहाँ पे उनका 3-6 छोटे छोटे weights थे, you are getting a lot more sector concentration. तो अगर वो sectors they do well तो अच्छा है, मतलब returns अच्छे आते हैं. But because थोड़ा portfolio sector concentration हो सकता है, it can also lead to more volatility. तो आपको ये invest करने से पहले आपको उस पे like just आपको you have to keep it in mind. Okay, next slide. Then just why HDFC AMC? So we have been one of the pioneers in index funds. हमारे 20 साल से ज़्यादा we have had index funds running. We also, for example, have been a pioneer in the small cap ETF category, and we also have commodity ETFs and all for many years. So because we've been in the passive space for many years, we have a lot of experience in the space, and the result is our sort of tracking errors, tracking difference, investor experience. It's generally very good and positive. Okay, so that's why we hope you would invest with us at HDFC AMC. Next slide. So here, very simple, just product के very basic features. Two important things, यहाँ पे entry और exit load दोनों नहीं है, so दोनों nil है. Minimum amount to invest is 100, and so that's why even if you are looking to start off small right now, आप NFO में छोटा amount से शुरू कर सकते हैं, and then as and when आप you can invest larger amounts later. Next slide. And this just standard asset allocation, मतलब कि the portfolio will be replicating the underlying index. So basically portfolio की securities, those 30 stocks ही hold करेगा. Next slide. And this is the riskometer at very high, like all other equity products. Next slide. ठीक है, बाकी सारे slides are on the appendix. Omkar, maybe you can go down 2-3 slides and just go to the disclaimer. And you can just leave it here, and then we can start the Q&A. Dear customer, we have just opened up for the question and answer. So you can just type your question in the chat box as well as in the YouTube chat box. So we will see the questions and we will answer. तो any questions, Omkar? क्या बोल रहे हैं आप? कोई क्वेश्चन आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, मैं देख रहा हूँ, जैसे आता आपको अपडेट कर. ठीक है. तब तक मैं जस्ट एक बार ये डिस्क्लेमर भी पढ़ लेता हूँ. हाँ. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.
So, Mr. Anirudh is asking like how often the fund manager will rebalance the portfolio. Okay, so can you go, मैं आपको बताता हूँ to slide 4. हाँ, so slide 4 पे we've mentioned कि the fund manager वो semi annually, so the index company reviews the portfolio साल में 2 बार करते हैं, जून एंड दिसंबर में. तो 2 बार में तो साल में 2 बार वो पूरा प्रोसेस रिपीट होता है, एंड देन वी नो कि कौन से स्टॉक्स निकलेंगे इंडेक्स से और कौन से स्टॉक्स आएंगे उनकी जगह. सो दैट इज डन जून एंड दिसंबर एवरी ईयर. The second question is from Mr. Raja. So he is asking, it is safe to invest in this fund for the new investor. So, sir, it would be difficult to say कि immediate short term, like how the performance will be in the short term. But Omkar, can you go to slide 13? So what one can, just look at the longer term horizon, right? That's why we've given these average rolling returns 1, 3 over 1, 3, 5, 10 years. So there, see, the longer you hold the portfolio, if the momentum strategy, sort of keeps doing well, then the longer your chances of outperforming the benchmark. कभी कभी होता है कि you may buy into the index, and then suddenly some trends may reverse to index में under momentum index में underperformance आएगा. But usually, right, again no guarantee, but usually एक दो review के बाद when the new trend, the momentum strategy picks up the new trend, और फिर again its performance becomes quite strong. So it's, like I said, difficult to give any prediction ki short term mein kya hoga, which is, but you can sort of look at these historical long term returns and see ki by and large the longer you've held for, the stronger the return over the benchmark historically. And इसमें आप SIP भी कर सकते हो. So again, because this is more of, we are saying you should have a long-term horizon of any, as in with any equity product, ideally 3 to 5 years. This is also no different. इसलिए आप इसमें, you can keep doing a lump sum, for example, in the NFO, and उसके बाद you can keep up an SIP, because these, it's very difficult to predict कि अभी इस quarter या इस 6 महीने में बहुत outperform या underperform होगा. That's why if you sort of believe in the logic of the strategy, if you think कि इसका return profile historically अच्छा रहा है, then best is to maybe start with a lump sum in the NFO, and then also keep an SIP going on. Most of the customers, as I can see here, so most of the customers are asking like, can you just give us the comparison from Nifty 50 of this fund so they can just relate to it. ठीक है. सो इफ यू सी, अगर ये स्लाइड पे भी देखोगे, राइट, सो हमने 3 इंडेक्स कंपेयर किया है. मोमेंटम इंडेक्स 250. सो ये अपना लेफ्ट कॉलम में एवरेज रोलिंग रिटर्न्स है. सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऑन एवरेज फॉर ऑल द 5 ईयर पीरियड जिसके पास हमारे पास डेटा है, मोमेंटम इंडेक्स हैज गिवन ऑन एवरेज 18% CAGR. वो सेम फिगर फॉर निफ्टी 50 हैज बीन 12%. Right? So clearly, historically, the momentum index on an average rolling return basis का return ज़्यादा रहा है. And Omkar, if you just go to slide 11, so here also आप देख सकते हो कि हमारे पास सेम, हमने हर जगह वो 3 इंडेक्स को कंपेयर किए हैं. Momentum 250. So again, you can see 3 years में, for example,
this index has given 31 point, momentum index ने 31.2% का CAGR दिया है और Nifty 50 ने 18.2% का CAGR दिया है. So this whole presentation is also up on our website, or so you can, if you want the numbers, you can easily download and look at it there. But abhi slide pe, they are all three indices are given, so आप अच्छे से compare कर सकते हो of this index versus Nifty 50. Shikhar, as I can see here, like there is no more questions, so you can just conclude this call. ठीक है, so I'll conclude by just mentioning that the NFO is open till 23rd Feb. So I hope you found this presentation useful. अगर आपके ये presentation आपको चाहिए तो हमारे website पे भी ये आपको मिल जाएगा. You can go through it, and कोई questions है कुछ हो तो you can please ask your representative, who will then pass it on to us. So good luck. I hope ये session आपको आपके लिए useful था, and thank you for your time.